गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डेथ पेनल्टी। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक डेकेड लॉन्ग स्टडी की गई है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद द्वारा, जिसमें सिस्टमिक फ्लॉज देखे गए हैं डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग के इंडिया में। तो डेथ पेनल्टी क्या है? एक लीगल पनिशमेंट है हीनस क्राइम्स के लिए, जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के लिए ही अंडर IPC CRPC। तो डेथ सेंटेंस जो है वो एक सेशंस कोर्ट पास तो करता है, लेकिन उसे कंफर्म करना होता है हाई कोर्ट ने। और डेथ पेनल्टीज जो है वो जो इंडिविजुअल जो 18 साल से कम होते हैं एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, उनके ऊपर नहीं लगाई जा सकती। अब BNS जो है उसमें भी डेथ पेनल्टी को रिटेन किया गया है, लेकिन ऑफ कोर्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। अब डेथ पेनल्टी जो है वो इनहेरेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, प्रोवाइडेड अगर उसका प्रोसीजर जो है वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल हो। आर्टिकल 72 एम्पावर भी करता है प्रेसिडेंट को कि वो ग्रांट कर सके पार्डन्स और कम्यूट कर सके सेंटेंसेस को, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंसेस। अब अगर हम देखें, 2025 में ही सेशंस कोर्ट ने लगभग 128 डेथ सेंटेंसेस 94 केसेस में अवॉर्ड किए। हाई कोर्ट्स ने ओवरटर्न किए डेथ सेंटेंसेस इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट किया अक्यूज को इन ओवर 50% ऑफ केसेस। तो एक पैटर्न इंडिकेट हो रहा है कि रॉन्गफुल और अनजस्टिफाइड कन्विक्शंस होती हैं। अब अगर हम देखें तो 574 पर्सन जो हैं वो इस टाइम 31 दिसंबर तक जो है वो हम के आंकड़े देखें तो डेथ रो पर वो हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट जो है वो अभी तक जो है डेथ पेनल्टीज जो है वो स्केल पर लगा रहे हैं, जबकि एपेलेट कोर्ट्स जो हैं जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो कॉशियस हैं इस पर। तो 2022 में जो गाइडलाइंस इशू की गई थी ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के लिए, ट्रायल कोर्ट जो है वो उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। कि मतलब गाइडलाइंस क्या थी कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करो, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखो, प्रेजेंट कंडक्ट रिकॉर्ड्स देखो बिफोर इम्पोजिंग अ डेथ सेंटेंस। तो डेथ पेनल्टी सेंटेंस की जो हियरिंग्स है उसको एक एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है फेयर ट्रायल का। और नॉन कंप्लायंस हो की जा रही है 2022 के गाइडलाइंस की, जिससे वायलेशन हो रही है आर्टिकल 14 और 21 की। तो 2025 में अगर हम देखें तो ट्रायल कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो है वो 83 में से 79 केसेस में फॉलो ही नहीं की। फॉर एग्जांपल, सेंटेंसिंग उसी दिन कर देते हैं जिस दिन कन्विक्शन होती है। तो मतलब जो मेंटल हेल्थ और प्रिजन रिकॉर्ड्स का जो डेटा होता है वो ही उनके पास नहीं आ पाता है उतनी देर में। लेकिन हायर जुडिशरी ऐसा नहीं कर रही है, हायर जुडिशरी रिस्ट्रेन दिखा रही है। ठीक है। एपेलेट कोर्ट्स जो है इंक्रीजिंगली कम्यूट कर देते हैं डेथ सेंटेंसेस को फिक्स टर्म या फिर होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बिना रेमिशन के। रिपोर्ट ये फ्लैग कर रही है कि पुअरली रेगुलेटेड और आर्बिट्ररी सेंटेंसिंग हो रही है ट्रायल कोर्ट्स द्वारा, जिसमें कि अगर हम देखें स्टेट्स वाइज डेटा तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ रो पॉपुलेशन है। और विमेन जो है वो 4.1% 418% जो है डेथ रो इनमेट्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है 2025 में। तो चैलेंजेस क्या हैं इसमें? एक तरह से दिखा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉलो करने की ज़रूरत है। 2022 की जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस हैं उन्हें इंपॉर्टेंट है उनको फॉलो करना। हाई रिस्क है रॉन्गफुल कन्विक्शंस का, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग और सेंसिटाइजेशन की जाए ट्रायल कोर्ट जजेस की, स्ट्रेंथन की जाए लीगल एड और डिफेंस रिप्रेजेंटेशन कैपिटल केसेस में, और लेजिस्लेटिव पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ फेयर ट्रायल, प्रोपोर्शनैलिटी और ह्यूमन डिग्निटी के साथ अलाइन किया जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मायोग्लोबिन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने एक फ्लेक्सिबल लो कॉस्ट बायोसेंसर डेवलप किया है जो कि डिटेक्ट कर सकता है मायोग्लोबिन को, जो कि एसोसिएटेड होता है अर्ली स्टेजेस ऑफ अ हार्ट अटैक के साथ। तो मायोग्लोबिन जो है वो प्रिडोमिनेंटली स्ट्राइटेड मसल टिश्यू में पाया जाता है, जिसको हम स्केलेटल मसल या फिर कार्डियक मसल कहते हैं। वन ऑफ द मेंबर्स है ये ग्लोबिन सुपर फैमिली का, जो कि जिसमें कि हेमोग्लोबिन भी आता है। ये मेडअप होता है अमीनो एसिड्स का, आयरन, अदर मॉलिक्यूल्स, और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू योर मसल्स। एक तरह से सेंसिटिव इंडिकेटर होता है ये सेलुलर डैमेज का, जब ये यूरिन या फिर प्लाज्मा में पाया जाता है। और एक तरह से ये बफर की तरह एक्ट करता है या इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस पर। तो ये नेसेसरी भी होता है डीकॉम्पोजिशन ऑफ बायोएक्टिव निट्रिक ऑक्साइड को निट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम विकास स्कीम। टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने राज्यसभा को बताया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम के बारे में, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की। और इसका एम है इंश्योर करना इंक्लूसिव ग्रोथ। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ऑफकोर्स आती है ये। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बिल्ड करना कैपेसिटी ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, और प्रिजर्व करना, प्रमोट करना कल्चरल हेरिटेज उनकी, प्रोवाइड करना फॉर्मल एजुकेशन और सर्टिफिकेशन, एम्पावर करना विमेन को, ठीक है, उनकी कम्युनिटीज़ से। तो NMDFC जो है उसको टास्क दिया गया है फाइनेंस देने के लिए कम्युनिटीज़ को। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट जो है उनको मार्केट लिंकेजेस देता है ताकि उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सकें।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं SFDR टेक्नोलॉजी। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। DRDO ने सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन किया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से। तो SFDR टेक्नोलॉजी है क्या? एडवांस्ड एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है जो कि एक सॉलिड फ्यूल गैस जनरेटर का यूज़ करता है। क्योंकि ये सॉलिड फ्यूल का यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ लिक्विड फ्यूल, इसलिए इसको सिंपल सिंपल सेफ और ईजियर रहता है इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना। अनलाइक कन्वेंशनल रॉकेट्स, SFDR कोई ऑक्सीडाइजर नहीं कैरी करता है, इसलिए ये लाइटर है, मोर एफिशिएंट है। SFDR प्रोवाइड करता है सस्टेन्ड थ्रस्ट ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। और SFDR जो है सिस्टम अलाउ करता है मिसाइल्स को कि वो फास्ट फ्लाई कर सकें, फार्दर और मैन्यूवरेबल हो सके थ्रू आउट देयर फ्लाइट। और इसको डेवलप किया गया है DRDL द्वारा इन कोलैबोरेशन विद अदर DRDO लेबोरेटरीज। और ये सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स ऑल्सो। और ये इंडिया को एक एलीट लीग में डालता है ऑफ नेशंस जो कि इस टेक्नोलॉजी को पोजेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि जो वेलफेयर और बेस्ट इंटरेस्ट है माइनर चिल्ड्रन का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन। तो टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन क्या है? ये प्रिज्यूम कर लेती है कि चिल्ड्रन जो टेंडर एज के हैं, मतलब 5 साल से कम के हैं जनरली, वो उनको मदर के साथ ही रहना चाहिए अंटिल शी इज़ प्रूवन अनफिट। तो इसमें कुछ असम्पशंस ली गई हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल बॉन्ड जो है वो मदर का ज़्यादा होता है, नर्चरिंग इंस्टिंक्ट मदर की ज़्यादा होती है, डेवलपमेंटल नीड्स ज़रूरत होती है बच्चों को माँ की। ठीक है, इमोशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि बेस्ट इंटरेस्ट और वेलफेयर ऑफ माइनर चिल्ड्रन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा है कि कस्टडी डिस्प्यूट जो है उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बाद चाइल्ड की ओवरऑल वेलबींग की, रादर देन स्टीरियोटिपिकल अजम्पशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पुनः सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और भूटान ने रिसेंटली डेलिब्रेट किया है ऑन द कमर्शियल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पावर आउटपुट फ्रॉम पुनः सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पुनः सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, लोकेटेड है ये भूटान में ऑन द राइट बैंक ऑफ पुनः सांगचू रिवर। और ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है अंडर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ भूटान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फोर्स फंड कर रही है। तो जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट है वो 2 गीगावाट का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, सेम रिवर पर बट लेफ्ट बैंक पर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट हिमांक। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रेयर साइटिंग हुई है स्नो लेपर्ड की प्रोजेक्ट हिमांक में हाई हिमालयाज में रिकॉर्ड किया गया है। प्रोजेक्ट हिमांक जो है एक प्रोजेक्ट है BRO का लद्दाख रीजन में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ रोड कम्युनिकेशन इन लद्दाख रीजन के लिए का इसका ऑब्जेक्टिव है। इंटायर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस प्रोजेक्ट की वो फॉल करती है हाई ऑल्टीट्यूड में, और चैलेंजिंग वर्किंग कंडीशंस और लिमिटेड वर्किंग सीजन की यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन और एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक एरियाज क्लोज टू LAC जो है वो विद चाइना मेंटेन रहे। अब BRO क्या है? रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है इंडिया की जो प्रोवाइड करती है सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। BRO को एंटायरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर लाया गया था 2015 में। डेवलप और मेंटेन करती है रोड नेटवर्क्स इन इंडिया के बॉर्डर एरियाज और इवन फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज में भी। इसका एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल रोल रहता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, और ये डायरेक्ट सपोर्ट देती है आर्मी को इन द मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। ओके, तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने के लिए एक्सपीडिशियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BRDB बनाया है, जो इसमें कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज खंजर 13। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 13th एडिशन जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो है वो शुरू हुआ है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। तो ये एक्सरसाइज एम करती है एनहेंस करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन स्पेशल फोर्सेज ऑफ बोथ द नेशंस, और ये हर साल जो है वो ऑल्टरनेटिवली इंडिया और किर्गिज रिपब्लिक में कंडक्ट की जाती है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is death penalty. This topic is important for your social issues. So a decade-long study has been conducted by Nalsar University of Law in Hyderabad, which is highlighting systemic flaws in death penalty sentencing in India. So what is death penalty? It is a legal punishment for heinous crimes, and it is restricted to the rarest of rare cases under the IPC and CRPC. So a death sentence passed by a sessions court must be confirmed by the High Court. Death penalties cannot be imposed on individuals who were under 18 at the time of the offence.
So BNS retains the death penalty for heinous crimes, and it is restricted to the rarest of rare cases. The death penalty is not inherently unconstitutional, provided the procedure is fair, just, and reasonable. Article 72 empowers the president to grant pardons or commute the sentences, including death sentences. Okay. So several judicial aspects are also there. If we look at the disparity between trial courts and appellate courts, we can see that in 2025 alone, sessions courts awarded 128 death sentences in 94 cases. High courts overturned death sentences in almost 90% of cases. Supreme Court acquitted the accused in over 50% of the cases, which indicates a pattern. And it indicates a pattern of wrongful or unjustified convictions. For example, 574 persons are on death row as of 31st December 2025, and trial courts are continuing to impose death penalty sentences at scale, despite the fact that appellate courts like the High Court and Supreme Court are increasingly cautious. So there are guidelines of Supreme Court in 2000, which were issued in 2022, which said that trial courts must consider psychological evaluation report, probation officer's report, and prison conduct records before imposing a death sentence. But it is increasingly being seen that trial courts are not following it. In fact, trial courts failed to comply with Supreme Court guidelines in 79 of 83 cases in 2025, which is basically 95% of non-compliance rate. So that this violates the article of 14 and 21 of the Constitution. And in several cases, it was seen that sentencing is often conducted on the same day as conviction, which basically is a hasty process, which prevents the collection of mental and health and prison records and effective presentation of mitigating circumstances by the defense. So higher judiciary is showing restraint, but parliament and state legislatures have also expanded the scope of capital punishment over the past decade, which reflects a disconnect between legislative intent and judicial application. Appellate courts have increasingly commuted death sentences to fixed term or whole life imprisonment without remission. This report flags that this is a poorly regulated and arbitrary sentencing category. States with the highest death row population include Uttar Pradesh, followed by Gujarat, Haryana, Maharashtra, Kerala, and Karnataka. And about 4.1% of death row inmates in 2025 were women. Okay. So, what are the challenges which have been highlighted and with the way forward? So, the trial courts must follow constitutional safeguards and of course the 2022 sentencing guidelines of the Supreme Court. Capacity building and sensitization of trial court judges must be done. Strengthen the legal aid and defense representation in capital cases. Align the legislative policy with constitutional values of fair trial, proportionality, and human dignity. Okay. So the next topic is myoglobin. This topic is important for your science and tech section. So researchers have developed a flexible low-cost biosensor which is capable of detecting myoglobin that is associated with the early stages of a heart attack. So myoglobin is found predominantly in striated muscle tissue, namely skeletal muscle and cardiac muscle. So it is one of the members of the globin superfamily, which also includes hemoglobin. It is made up of amino acids, iron, and other molecules which work together to hold onto oxygen. So um, myoglobin transports oxygen from bloodstream to your muscles. It serves as a sensitive indicator of cellular damage when detected in urine or plasma. It also serves as a buffer of intracellular oxygen concentrations. It is necessary for the decomposition of bioactive nitric oxide to nitrate. Okay. So the next topic is PM Vikas scheme. This topic is important for your social issues. So, Union Ministry of Minority Affairs has informed the Rajya Sabha about the Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan scheme. So, this is a central sector scheme which focuses on socio-economic empowerment of minority communities. It aims to ensure inclusive growth not only for the minority and artisan communities but also for the youth and women. So, the aim of this scheme is to build capacity of minority communities, preserve and promote the cultural heritage, including their traditional arts and craft forms, provide them with formal education and certification, empower women from minority communities. So NMDFC has been given the responsibility of providing finance to the communities. Okay, and Export Promotion Council for Handicrafts provides market linkages in order to provide livelihood opportunities for the beneficiaries. Okay.
So the next topic is SFDR technology. This topic is important for your security section. So DRDO has carried out successful demonstration of solid fuel ducted ramjet technology from the integrated test range Chandipur off the coast of Odisha. So solid fuel ducted ramjet technology is an advanced air breathing propulsion system using a solid fuel gas generator. It uses a solid fuel instead of liquid fuel, which makes the system simpler, safer, and easier to store and transport. Unlike conventional rockets, SFDR does not carry an oxidizer, making it lighter and more efficient. SFDR provides sustained thrust over a longer duration and allows thrust modulation during flight. SFDR system allows missiles to fly faster, farther, and remain maneuverable throughout their flight. It has been developed by DRDL in collaboration with other DRDO laboratories. It significantly enhances long-range air-to-air missile by providing sustained propulsion throughout much of the missile's flight. It also places India into an league of nations possessing this technology, which enables developing longer range air to air missiles to give tactical edge over the adversaries. So the next topic is tender years doctrine. This topic is important for your social issues. So Delhi High Court has recently held that welfare and best interest of the minor children must prevail over the application of tender years doctrine. So this tender years doctrine presumes that children of tender age, usually under 5 years, should remain with their mother unless she is proven unfit. So the doctrine rests on on several assumptions that there is a biological bond between mother and the infant. There are nurturing instincts with mother. Developmental needs require maternal involvement. There is emotional security involved with the mother. But the High Court of Delhi has ruled that the best interest and welfare of minor children are paramount, and they must override the application of the tender years doctrine. The court also held that custody disputes must be resolved based on a comprehensive evaluation of the child's overall well-being rather than stereotypical assumptions regarding parental roles. So the next topic is Punat Sangchu 2 hydroelectric project. This topic is important for your international relations. So India and Bhutan have recently deliberated on the commercial optimization of power output from the Punat Sangchu 2 hydroelectric project. So it's a run-of-the-river hydroelectric power project which is located in Bhutan on the right bank of Punat Sangchu river. This project is being developed under an intergovernmental agreement between the Royal Government of Bhutan and the Government of India. It is funded by the Government of India. Okay, so what is the first hydroelectric project on Punat Sangchu? It is the 2 gigawatt run of the river project on the left bank of Punat Sangchu river. Okay, of course, it is also being funded by Government of India. So the next topic is Project Himank. This topic is important for your security section. A rare sighting of elusive snow leopard has been recorded by Project Himank in the high Himalayas recently. So Project Himank is a project of BRO in Ladakh. Its objective is development of road communication in the Ladakh region. The entire area of responsibility of this project falls in the high altitude with challenging working conditions and a limited working season. This project ensures the maintenance of communication and access to strategic areas close to the LAC with China. What is BRO? It is a road construction executive force in India which provides support to the Indian Armed Forces. This was entirely brought under the Ministry of Defense in 2015. It develops and maintains road networks in India's border areas and friendly neighbor countries. Okay, BRO also has an operational role during national emergencies and the outbreak of hostilities, which when it provides direct support to the army in the maintenance of roads. Government of India has set up the Border Roads Development Board with the Prime Minister as chairperson of the board and Defense Minister as deputy chairperson. So the next topic is exercise Khanjar 13th. This topic is important for your security section. So the 13th edition of Joint Military Exercise Khanjar has started between India and Kyrgyzstan in Sonitpur district of Assam. So of course this is the 13th edition and it happens every year alternatively in India and Kyrgyz Republic. The aim of course is to enhance interoperability between the special forces of both countries. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.